हेलो दोस्तों। तो आज से हम अपनी पाइथन की जर्नी शुरू करने वाले हैं। हम जाएंगे पाइथन में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक। और जब मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा उसके बाद आप अपनी लाइब्रेरीज या फ्रेमवर्क सीखना शुरू कर सकते हैं, जिससे आप अपनी आगे की एआईएमएल की जर्नी या डेटा साइंस की जर्नी शुरू करें। अब सबसे पहली बात होती है कि पाइथन ही है, जावा या सी प्लस प्लस क्यों नहीं। तो पाइथन जो एक लैंग्वेज है वो बहुत ही इजी टू रीड है, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। ये आप वेब डेवलपमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, ये आप डेटा साइंस में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आप एएमएल में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जावा का एक ग्राफ दिया गया है। जावा बहुत ही एफिशिएंट लैंग्वेज है, इसीलिए आपने सुना होगा एक वर्ड, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। इफ यू आर जस्ट अ लिटिल बिट इनटू कंप्यूटर साइंस यू मस्ट हैव हर्ड इट। सो मोस्टली पीपल प्रेफर करते हैं डीएसए जावा या सी प्लस प्लस में करने की, बट पाइथन में रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट इन बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं टू मेक पाइथन ईजी। सो इट वॉन्ट बिल्ड एनी ऑफ आवर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, बट पाइथन इज क्वाइट एन ईजी लैंग्वेज टू लर्न। इसका ही रीज़न है कि वो एफिशिएंट कम है, बट बहुत ही हाईली रीडेबल है। और वो जो हम कोड लिखेंगे वो इतना इजी लगेगा जैसे कि हम एक इंग्लिश का सेंटेंस है लिख रहे हो। अब पाइथन के लिए सिर्फ आपको एक पाइथन का कंपाइलर सॉरी इंटरप्रेटर यूज करना पड़ता है, जिससे आप हर एक प्लेटफॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज, मैक या लिनक्स, किसी में भी चल जाती है पाइथन। पाइथन इज ट्रस्टेड बाय गूगल, बिकॉज आपने देखा ही होगा आजकल एआई का बहुत ज़्यादा बूम हो रहा है, और एआई में मोस्टली पाइथन ही यूज होती है, क्योंकि पाइथन लार्ज डेटा सेट के लिए बेस्ट लैंग्वेज टू लर्न। अब हम आते हैं नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स में भी डेटा साइंस का बहुत यूज़ होता है, जैसे कि आपको रिकमेंडेशंस देना फिल्म्स का, वो उसमें मोस्टली काम डेटा साइंस का है और डीप लर्निंग का होता है। नासा नासा के पास ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसको हैंडल करने के लिए डेटा साइंस यूज़ होती है, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स। सो जहाँ भी डेटा मेनली आता है वहाँ यूज़ हो जाता है पाइथन का। AIML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। Python is very flexible language and can be used everywhere, basically everywhere. So अब पाइथन का यूनिवर्स एक्सपैंड करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें पाइथन के बेसिक्स का जानना ज़रूरी है, कि हम बेसिक कोड कैसे लिख सकते हैं। So to make a tree you just need to start from the roots, right? To make a tree you need to start from the roots. Basics are basically the roots of the Python. Then we'll move towards the data structures, what kind of data are stored in Python. Then we'll go towards functions, and then we'll go towards oops. Now, I will cover everything up until here, but after this, it's your journey to choose whether you are going to be interested in data science or web development or AIML. Wherever you need to go, you will have to learn built-in modules and packages. अभी built-in मॉड्यूल और पैकेजेस क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे एक पाइथन के फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनसे हम पाइथन का एक पर्टिकुलर फील्ड में इजी बना सकते हैं। सपोज देयर आर few libraries, I will tell the names, such as NumPy. You would have heard pandas, TensorFlow, Matplotlib. There are many. See, we have even written few frameworks here. These are libraries, and this is a framework. Django is a framework for backend. Flask is a framework for backend. Fast API is a backend, and then all of these are used for web development. And you can see here for data science, there is NumPy, Pandas, Sci, SchoolPy, skitlearn, and many more. Like suppose matplotlib का example ले लेते हैं. This is basically used for plotting graphs into the from the use of Python into the computer itself. Now moving ahead, what we'll learn is variable and operators, its data types, what are conditional statements, loops, input output statements, everything. So first of all, to write a basic, just like
most basic thing in Python or any other language is hello world. It's just a basic thing. So to print anything into the Python console, we use the function print. So as you can see, we have written print, then we have apostrophes, then hello world. And then what will the output be? Hello world. So what which data structure should I use? What are data structures? Data structures are basically data types. Suppose आपने बहुत सारा कुछ एक सीक्वेंस में स्टोर करना है, so you wouldn't use different boxes. You'll use a single box to store off all of them. For better understanding, I'll use a diagram. Uh, let's just say this. Yeah. So let's just say you have like five apples to sorry. So let's just say you have five things, different things in a shopping list, right? Shopping list. So instead of shopping all the five things in five different bags, you would like to store all these five things in a single box or bag, but in an organized way, right? So in the same way, there are many kind of data structures which are useful in different scenarios. अब जैसे आप एक शॉपिंग करने गए और आपने टमाटर एक जगह रख दिए और आलू एक जगह रख दिए, एक डिफरेंट बॉक्स में टमाटर रखे, एक डिफरेंट बॉक्स में आलू रखे, लेकिन आप इन दोनों को यूज करना है हमें डिफरेंटली। लेकिन अगर हम इन दोनों को एक ही जगह स्टोर कर देंगे तो इन्हें छांटने में दिक्कत आएगी। टू कलेक्ट देम इट वुड बी जस्ट एन हैसल, सो वी यूज different boxes for them, right? So in the same way, for different scenarios we use different data structures. Now what is the what is that we'll be learning in Python now? We'll be learning few more things such as exception handling. सपोज कोई एरर आ गया कोड में तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे, और हमें फाइल और डेटाबेस कैसे हैंडल करना है, इसका हम सब का बेसिक्स यहाँ पर क्लियर करेंगे। नाउ in data science and web development, there are few different paths and libraries you need to learn. This is just basics so that you, when you study Python and end this course, then you have to learn something new, right? To go ahead. So these are few things that you'll have to learn for going into data science or going into the web development. So there are few frameworks that I already told, that is Pandas, Scikit-learn, and TensorFlow for data science. What is data science major goal? To predict, analyze, and give patterns. And web development is just like making websites. It's just basically making websites. And to learn web development from Python, you'll have to learn Django, Flask, and FastAPI. All of these are backend frameworks. And and database, if you want to focus on just database, then you'll have to learn MongoDB, which is a NoSQL based database. You don't need to go deep into this right now. This is just basically an introduction to all of this. Now, these are like stacks of what you can do when you learn Python. You can go into deep learning, machine learning, advanced statistics, and foundational. So first of all, you need to build a foundation, right? So if you know NumPy, Pandas, and Matplotlib, then you can go into Seaborn and Stats model. If you know both of these, you can go scikit-learn, XGBoost, and GBM. If you learn at least all these libraries, you can do machine learning and build your own projects. And if you want to go ahead of machine learning, so inside machine learning, there comes a part called deep learning, where you have to learn TensorFlow, PyTorch, and Keras. Now, this is a web development architecture. Just I'll give a basic understanding of web development.
First of all, front end. Front end basically means all the buttons, the links you click, all of the interactive part is front end. API is basically what links your front end and back end. And core web frameworks. Here are some frameworks to use backend, and the database where your data is actually stored. So we what we'll be doing, we might be doing not chapter wise, but mostly we'll be doing practice quizzes, and we'll be solving many coding problems in the coming lectures, and we'll also be sharing a few interview question and answers that will help you crack any job in the coming future or even your college exams. So that is it for today's lecture, and we'll meet you in the next lecture.